Hello and good evening, everyone. Welcome to Paytm Money Express, a brand new education initiative. And today's topic is passive funds and fixed income AMA. Ask me anything. So before I start, very quickly, I would like to read out the disclaimers. Investment in mutual fund and the securities market are subject to market risk. So read all the related documents carefully before investing. All the presentations, discussions, content are purely educational in nature, are in no way an advice or recommendation. Representations are not indicative of future results. For more information, please visit Paytm Money website. I'm Neeraj Gogoi, your host for the show. And today, the first part is Passive Fund AMA, Ask Me Anything by Mr. Abhishek Singhal. So let me introduce Abhishek. Abhishek has got more than 22 years of experience in asset management and advisory. He is a head passive and products Aditya Birla Sun Life. He also drives business strategy initiatives for the alternative vertical of the AMC. Before that, he was head of products. So it's a great pleasure to have Abhishek. As always, welcome, Abhishek. Thank you so much, Neeraj. It's very privilege to be here again and again. Thank you for inviting me again. Hello, all viewers. Absolutely. And I would like to tell all our viewers today, right in the beginning, that we don't have any clear format today, right? So it's up to you. Ask questions about passive investing, ETFs, mutual funds. Feel free. If you could not understand some concept before, please feel free. Go ahead and ask your question. And those are the questions that's going to drive the show today. So Abhishek, to start with, to kickstart the whole discussion today, I'd like to pick up some questions which were asked in the past but हम लोग ने उनको आंसर नहीं कर पाया था. ठीक है, तो उन्हीं का ही ले लेते हैं. एक मोहित जी था, मिस्टर मोहित, उन्होंने पूछा था कि ये डिफरेंस क्या है बिटवीन ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड का बीच में. तो ये भी बता दीजिए. और एज ए होल अभी क्या, एज ए हम लोग हमेशा एक अपडेट लेते हैं कि माहौल का, अभी इन्वेस्टमेंट माहौल कैसे बन रहा है. सो लास्ट एक वीक में कोई चेंज है क्या, तो वो भी कवर करके आप एक बता दीजिए हम लोग को. Sure. तो स्टार्टिंग विद मार्केट आउटलुक, बाजार जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ कि आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक, ऑलवेज बुलिश. अभी भी हम्म, बाजार बुलिश टोन ही दिखा रहा है. फ्रेश हाइज इस हफ्ते हिट हुए हैं, बोथ हम्म, ऑन एनएससी एज वेल एज ऑन बीएसई. एंड उम्मीद करेंगे कि ये मोमेंटम चलता रहे, लेकिन बोलते हैं ना कि पार्टी बहुत लंबी चलती है तो बहुत ज्यादा लोग बीमार हो जाते हैं. तो आई थिंक इट इज हाइट ऑफ द पार्टी राइट नाउ. तो वन शुड एक्चुअली सोबर डाउन अ लिटिल बिट. थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए लोगों को. लेकिन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मार्केट फंडामेंटल्स लुक वेरी गुड. मार्केट लिक्विडिटी लुक्स वेरी गुड. डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरफ से बहुत पैसा इंडिया में फ्लो कर रहा है. वैल्यूएशंस इसी वजह से शायद थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगने लगे हैं. तो थोड़ा ध्यान दें, स्टैगर करके इन्वेस्ट करें. एसआईपीज इज द बेस्ट रूट टू इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, आई थिंक. और अच्छा क्वालिटी का जो भी स्टॉक हो या फंड्स हो, उसके अंदर में इन्वेस्ट करना बहुत फायदेमंद है. Coming to the question that you placed, इंडेक्स और ईटीएफ में क्या डिफरेंस है. तो पहले मैं बता दूं कि ये दोनों के दोनों पैसिव फंड्स हैं. पैसिव फंड्स हम्म, होते क्या है? पैसिव फंड्स वो होते हैं जो कि एक्टिवली डे टू डे बेसिस के ऊपर में स्टॉक कॉल या सेक्टर कॉल नहीं लेते. ये थोड़ा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे बेस्ड है. एक तरह से आप एल्गो समझ लीजिए, एआई जैसा सा समझ लीजिए. और ये दोनों एक ही नजरिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. तो ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, यानी कि वो म्यूचुअल फंड या वो पैसिव फंड जो कि आप एक्सचेंज के ऊपर में खरीद बेच सकते हैं. तो हर सेकंड उसका एक डिफरेंट भाव है एक तरह से. और इंडेक्स फंड वो वाले पैसिव फंड्स होते हैं, सेम इंडेक्स जो ईटीएफ में आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एंड ऑफ द डे आपका परचेज या रिडेम्पशन बुक होता है. तो जिन लोगों के पास एक ब्रोकिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, वो ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं. जो बाकी लोग अगर ट्रेड करना चाहते हैं, जो कि नए लोग हैं मार्केट के अंदर में, दे कैन स्टार्ट विद इंडेक्स फंड. तो आप ऐसा समझ लीजिए कि दोनों के दोनों
इंटरमीडिएट, बिगिनर एंड इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल ऑफ पैसिव फंड्स हैं एक तरह से। ओके, काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछना चालू कर दिए हैं एंड देयर आर स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी काफी लोगों ने पूछे हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल माय व्यूअर्स दैट हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक आंसर नहीं कर पाएंगे, बट अदरवाइज जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो तो हम लोग बिल्कुल ही लेंगे. So a question is the third eye. He said, why AMCs are not introducing their own customized indices in passive side, indexes in passive side? Uh, uh, Abhishek, are you there? Can you hear my voice, Abhishek? Hello, Abhishek, can you hear me, my voice? Okay, I think there is a little bit of interconnection connection problem. So he'll be back in a second. Just in the meantime, I would like to thank all of you. There are so many questions that you were asking. Anwar, Siddharth, Sanket, Mohit, Faisal, Manish, Vivek, Rahul, Anjali, Anil, and Mohit, all of you. So we'll be answering all these questions. I think there is a small internet issue with Abhishek. So in the meantime, we have been talking about. Okay, so we have been talking about passive fund investing, and today I'm going to tell you about the second part of the discussion. Is going to be Vandana. She's going to talk about fixed income, and she's from Axis, and is going to take lot many questions with respect to interest rate cycle, how the interest rate cycle is going to impact the fixed income part specifically. So bond and all this kind of things that we're going to discuss in the second part. So first part is with Abhishek. So great that you have been asking questions. So just I request all of you to hold on for a second, so that I hold it for a second, so that okay. So there are some beautiful questions. Okay, no, Anil, Abhishek will be there. I think there is some issue with his internet connections. You know, so okay. So Paytm money, how to invest in ETF? Okay, THR उन्होंने पूछा Paytm money, how to invest in ETF. So you can always go to ETF sections. You can go to Market Watch. You can choose your ETF that you want to buy, and then you can place your order. Very simple to use that platform to buy ETF and mutual fund as well. So Abhishek, great to see you back. I'm so sorry. I think it's a technical glitch. We just lost internet here. My apologies to everyone. I'm sorry. We were on the last question. You said, I think, why are AMC is not introducing customized indexes? So, Yes. viewers, customized indexes possible है करना. In fact, on the fixed income side, most of the indexes that you are seeing, हम लोगों ने जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स या टारगेट डेट इंडेक्स फंड्स जो लॉन्च किए हैं, ये लार्जली कस्टमाइज्ड हैं, लेकिन करंट रेगुलेशंस हमारे को अलाउ नहीं करते हैं, फिजिबल नहीं रखते हैं कि हम लोग इंडेक्स को प्रोड्यूस करें और उसको पब्लिश करें. तो उसके लिए वी वर्क विद एजेंसीज लाइक एनएससी, वी वर्क विद क्रिसिल, बीएससी, एमएससीआई, मेनी अदर इंडेक्स प्रोवाइडर्स, और उन इंडेक्सेस को क्रिएट करके हम लोग पब्लिकली पब्लिश करवाते हैं और उन्हीं के ऊपर में फंड्स को डिजाइन करते हैं. देयर विल बी a time not very far, long from now, maybe in another 2 years from now, you will probably see own customized indexes also, as you know, passive funds become bigger and bigger. Okay, good. I think we have got lot many questions. Mohit, I will come back to your question slightly later. So Faisal Arshad. Hello, sir. I'm investing in Nifty Momentum Quality 30 Index Fund. Is it good for long term investment for next 15 to 20 years?
फैंटास्टिक इंडेक्स टू पिक अप फजल. ये जो इंडेक्स है ये दिस इज अ स्लाइटली मोर एग्रेसिव सॉर्ट ऑफ इंडेक्स. I think what you should also do is that once you have invested in momentum, you should also start. You already have quality. I think you have both parts of the spectrum, a very aggressive one and a very stable one as well. The Mm-hmm. one more index that perhaps could do well in your basket is also the value index. This index will pick up spaces जहां पे मार्केट सडनली चीप हो जाता है, या Mm. अगर ऐसे प्रेजेंट मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव अगर मार्केट लग रहा है तो चीप एंड कहां पर है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड कहां पर है, तो ये वो वाला एंड आपको पिकअप करके प्रोवाइड कर पाएगा. सो दिस इज अ ठीक ग्रेट है. थर्ड इंडेक्स टू ऐड, स्मार्ट बीटा इंडेक्स, to your list of investments. Wonderful. Manish, I think your question is already been answered. So I will go to Vivek now. Vivek Kumar, sir, retirement के लिए कितना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो होना चाहिए फॉर पैसिव इनकम? I'm looking for up to 2 lakh per month passive income. Please suggest the portfolio and sector percentage bifurcation as well. विवेक, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है गिवन द फैक्ट दैट आपका रिस्क एपेटाइट हमको अभी नहीं मालूम है. आई वुड से दैट अगर 2 लाख रुपए, एंड काफी सारे कैलकुलेटर्स एक्चुअली अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, पेटीएम मनी के साइट पे भी अवेलेबल है, जो रिटायरमेंट इनकम के लिए आपको 2 लाख की इनकम के लिए कितना, अगर आप अज्यूम करें कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, इन्फ्लेशन कितना होगा, आपका रिटायरमेंट कितने समय में है प्रोजेक्टेड, वो सब फैक्टर्स लेके कितना कॉर्पस से शुरू करना चाहिए. मेरा अंदाजा ऐसा है कि अगर आज आप लेट्स से 40 to 50 की एज के अंदर में है, तो गिवन प्रेजेंट इन्फ्लेशन you should target somewhere between 8 to 10 crores to generate a 2 lakh rupee per month. सेक्टर वगैरह ना करें, सेक्टर स्टॉक्स ना करें, लीव इट टू प्रोफेशनल्स. अगर आप सिर्फ पैसिव फंड्स में भी डाल देते हैं, निफ्टी 50 इक्वल वेट आर स्मार्ट इंडेक्सेस टू लुक एट टू स्टार्ट ऑफ. maybe put 25% of small cap in your portfolio. Small cap 50 index है, उसमें डालिए. It will give you a very healthy run rate. अगर आप 1-2 करोड़ के कॉर्पस से शुरू कर रहे हैं, सर्टेनली आप अपना टारगेट नंबर 60 साल की उम्र तक रीच कर पाएंगे. Okay. A question Rahul say, sir, I feel that large cap funds don't have the potential to generate alpha, but mid and small cap still do. Why should I invest in an index fund for my small and mid cap category? मतलब एक पूरा फंडामेंटल क्वेश्चन है. राहुल, आई डिसएग्री कि लार्ज कैप में अल्फा जनरेशन पोटेंशियल नहीं है. अगर आप डेटा देखेंगे 2018-19 का, तो you'll be surprised, despite the fact that पूरा मार्केट प्रॉफिटेबल था, स्मॉल कैप एंड मिड कैप ब्लेड. They were negative by 25-30%, some of them even 40% for the years. लेकिन लार्ज कैप जनरेटेड सॉलिड रिटर्न्स. इट जनरेटेड समवेयर इन द विसिनिटी ऑफ 35-40%. बिल्कुल उल्टा चले थे. तो ये समय समय की बात होती है, मार्केट साइकिल की बात होती है. किसी समय, अभी जैसे पिछले 1-1.5 साल में आपने स्मॉल कैप मिड कैप रैली देखा है, अभी एक बार एक्सपेंसिव हो जाएगा, फिर आप देखेंगे कि सडनली लार्ज कैप चल रहा है और स्मॉल कैप मिड कैप थम जाता है. बिल्कुल. तो यू नीड टू सी इट फ्रॉम अ लॉन्गर टाइम फ्रेम, नंबर 1. नंबर 2, आपको एक बैलेंस रखना पड़ेगा रिस्क और रिवॉर्ड का. सिर्फ रिटर्न ओरिएंटेशन रखेंगे तो यू नीड टू बी क्लियर, आपको रिस्क भी ज्यादा बेयर करना पड़ेगा. तो स्मॉल एंड मिड कैप डेफिनेटली वेरी ग्लैमरस, वेरी सेक्सी, लेकिन आपको उसके साथ रिस्क भी उसका एसोसिएटेड है, वो समझना चाहिए. तो लार्ज कैप, इफ यू आर यंग, इफ यू आर एग्रेसिव, maybe have 35-40% and rest of it being small and mid cap, but 50-60% large cap रखेंगे, longer term में you will not be disappointed, believe me. Correct. Anjali, you are asking question like ETF में SIP कर सकते हैं क्या? Definitely. बिल्कुल कर सकते हैं. पेटीएम में अगर ETF में आपका आप कर सकते हो प्लेटफॉर्म अलाउ डेफिनेटली. करता है. हाँ. Yes, yes, yes. अनिल भल्ला, ठीक है. What is the best T-bill or corporate bond? Stocks with JP. What is the best T-bill or corporate bond? Can we answer that? I'm
नॉट श्योर व्हाट इज द बेस्ट टी। सो टी बिल इशू करता है आरबीआई के थ्रू होता है, भारत सरकार ही इशू करता है, तो देर इज नो कंपैरिजन। टी बिल इज टी बिल। तो दो तरीके के होते हैं, एक 91 डे होता है और एक 364 डे होता है। दीज आर बोथ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड टिपिकली कंपनीज ही इशू करती हैं। ये ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए, डिपेंडिंग ऑन रेटिंग ऑफ द कंपनी, ये अलग अलग ब्लेंड्स होते हैं। दे ऑफर इंटरेस्ट रेट्स हायर देन टी बिल्स टिपिकली। आई एम गेसिंग कि आपका क्वेश्चन है कि क्या हमको टी बिल वाले फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई वुड से कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कैटेगरी काफी सेफ है। इट फोकसेस लार्जली ऑन ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स ओनली। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है इस कैटेगरी का ओवर द लास्ट 5, 10, 15 ईयर्स टाइम फ्रेम। आपको कोई सा भी टाइम फ्रेम देखिए, बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है ऑन अ रोलिंग रिटर्न बेसिस। माय सजेशन वुड बी, अगर आपके पास 1-2 साल का पैसा है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कैटेगरी देखिए। लॉन्गर टर्म मनी ऑल्सो यू कैन जस्ट पुट देयर, fill it, shut it, forget it कैटेगरी है। Great. Siddharth का I think if you can quickly answer Siddharth का question भी है, what is the next best alternative to invest in savings balance at a minimal risk to earn interest more than what bank is offering? तो सिद्धार्थ का क्वेश्चन आई थिंक इज रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप सेविंग्स बैंक अकाउंट बीट करना चाहते हैं तो लो ड्यूरेशन कैटेगरी वाला कोई भी आप फंड ले सकते हैं। आई थिंक लो ड्यूरेशन फंड इज अ गुड कैटेगरी टू बी इन। और उसके अंदर में रिस्क भी बहुत मिनिमल होता है, 1 साल के आसपास की ड्यूरेशन होती है टिपिकली। okay. Now Anjali, what is the taxation on ETFs and index funds? ग्रेट क्वेश्चन अंजलि। आई थिंक ये आपको प्योर इक्विटी एक्सपोजर दे रहे हैं तो आपको इक्विटी टैक्सेशन मिलता है इनके अंदर में। शॉर्ट टर्म का टैक्सेशन यानी कि 1 साल के अंदर बाय और सेल अगर आपने किया तो यू गेट चार्ज 15% एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। एंड यदि आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल से लंबा जाता है तो यू आर सब्जेक्टेड टू LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जहां पे आप 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस पे करते हैं। Great. There's a question from Mr. Joshua DiMello. My daughter is 2 years old and I want to do 2 SIPs for her future. Where would you suggest that I start the SIP? Total SIP amount I can allocate is 15,000. Fantastic question, Joshua. Congratulations for a young daughter. लड़की लक्ष्मी है। आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत इसका रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। गुड थिंकिंग। 15,000 में से, गिवन दैट शी इज ओनली 2 years old, एंड आई एम गेसिंग कि आप लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं उसका मैरिज या उसका हायर स्टडीज के हिसाब से, तो कम से कम 8 से 10 साल तो मिनिमम है ही आपके पास। Put maybe 50% of the money in Nifty Next 50 index fund and 50% of the money in mid cap index fund. दोनों के अंदर में combined आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, more than 10-12% CAGR on a rolling returns long term basis, because that's been the general returns from this category over the last 15-20 years. Okay. Now, again, there's a question from AJS. And first of all, I'd like to congratulate him for this question. Say, today, for the first time, I bought shares in my life. Adani Port through Paytm. I want to invest 15,000 rupees monthly. Please let me know where to invest. Fantastic. Congratulations, AJS, for starting your investment journey. I think you should start doing SIPs in ETFs itself. It's a very, very easy, simple, and economical way of building a portfolio. Put maybe 5,000 in a Nifty 50 ETF. Put another 5,000 in a momentum ETF. It will give you acceleration, slightly extra. हमेशा अच्छा लगता है। और 5,000 के आसपास एक क्वालिटी ETF में डाल दीजिए। क्वालिटी ETF आपको इंश्योर करेगा जब मार्केट्स करेक्ट होंगे, जब ये पार्टी जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि पार्टी थोड़ा सा लंबी चल गई है, थोड़ा सा करेक्शन आएगा, वॉलेटिलिटी आएगी, क्वालिटी विल गिव यू दैट नेसेसरी hedge in the portfolio, cushion in the portfolio. ग्रेट। रिंकल पेटल, आपने पेटीएम मनी का ऑप्शन सेलिंग के ऊपर पूछे हैं। रिंकल, देखिए, ये हम लोग का एक्सचेंज से डिसाइड किया हुआ है मार्जिन है, वो तो देना ही पड़ेगा।
So as of now, we follow the complete exchange ka guideline. Okay. So there's a question from Siddharth. You can consider children's plan mutual fund. Acha, you can consider children's plan mutual fund. What is that? Are you getting something of it? I'm guessing they are asking कि क्या चिल्ड्रंस कैटेगरी जो है What उसमें is? इन्वेस्ट करना चाहिए. Huh. It's not a bad idea. Only Mm-hmm. thing to remember there is that Siddharth, ये कैटेगरी में ना एक क्लॉज होता है, लॉक इन क्लॉज. Mm-hmm. So any funds that you invest in children's category of mutual fund, जब तक बच्चा 18 साल का ना हो जाए या 5 years, whichever happens first, is the minimum lock-in period. It's not an exit load, it's a lock-in. तो आप ऐसा नहीं है कि कोई कॉस्ट भी दे के एग्जिट कर सकते हैं. तो Mm-hmm. रिमेंबर, इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव पेशेंस फॉर दैट लॉन्ग, तो ही आपको डालना चाहिए. अदरवाइज आई एम गेसिंग दैट you will get similar returns या similar approach in in a diversified or in a nifty 50 sort of index fund. Okay. If you are disciplined, if you are worried कि कहीं बिहेवियर की वजह से, कहीं डिसिप्लिन की वजह से हम एग्जिट ना कर लें फंड को, तो maybe it's not a bad idea to consider children's category also. Because of long term nature, typically returns here have been quite decent. So it can be Okay. considered, but I would still Mm-hmm. say liquidity हाथ में होती है, उसकी ऑप्शन वैल्यू अलग ही होती है. Invest a small part there and a larger part in more liquid sort of categories. ओके. अच्छा, अक्षय छेड़ा छेड़ा ने पूछे हैं, सर क्या फॉरेन में भी पैसिव फंड्स है क्या? और क्या हम इंडियंस वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन वाले पैसिव फंड्स में? Akshay, great question from for others to follow from your question. The passive index, the passive funds category, index and ETF both, is much larger outside India. In fact, आपको सुन के शायद हैरानी हो, इंडिया में पैसिव्स पिछले 5-6 साल में ही बड़े हुए हैं, जबकि ग्लोबली एंड स्पेशली यूएस, विच इज द लार्जेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, वहां पे 30-40 साल से पैसिव्स का बोलबाला है. इनफैक्ट पिछले 8-9 साल से मोर मनी गेट्स इन्वेस्टेड इन पैसिव्स देन इन एक्टिव फंड्स. तो यस, हर तरीके के, हर कैटेगरी, हर सेक्टर, हर मार्केट के पैसिव फंड्स अवेलेबल हैं आउटसाइड इंडिया. आप एलआरएस के जरिए उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने नाम से. सेकेंड वे टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल मार्केट्स थ्रू इंडिया इज टू इन्वेस्ट इन फंड ऑफ फंड्स. इंडिया में फंड ऑफ फंड्स अवेलेबल, जैसे हमारे पास एक नास्डैक फंड ऑफ फंड है, नास्डैक एफओएफ है. तो जो सबसे सक्सेसफुल ग्लोबल इंडेक्स है इज नास्डैक 100 इंडेक्स. हमने उसी इंडेक्स के अंदर में एक फंड ऑफ फंड बना दिया है फॉर इन्वेस्टर्स लाइक योरसेल्फ, कि जो बाहर पैसा भेजना चाहते हैं. और सिर्फ इक्विटी ही नहीं, डेट का भी इंडेक्स फंड अवेलेबल है. तो जैसे हमने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, क्योंकि यूएस में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊपर गए हैं, ब्याज दरें बहुत ऊपर गई हैं, और अब उसमें रेट कट एक्सपेक्टेड है अगले साल के अंदर में. तो क्या हम उससे पैसा बना सकते हैं पैसे फंड में इन्वेस्ट करके? हाँ, बना सकते हैं. हमने एक यूएस ट्रेजरी बॉन्ड एफओएफ लॉन्च किया है, जो कि ऐसे ही ग्लोबल ईटीएफ के अंदर में इन्वेस्ट करता है. तो यस, योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज यस. सेकंड क्वेश्चन, क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस यू कैन, बट यू विल हैव टू फॉलो द एफओएफ रूट. Okay, great. So there's a question. In fact, there are a lot many questions today. In fact, I would like to thank all our viewers today because they have been posting questions. There are some questions which are slightly repetitive in nature, which I'm not taking at this point of time, so that we can cover maximum, right? So, a question से पालक चारिया से, if you can quickly answer, if there is no interference from the fund manager in the passive fund, why do we have a fund manager? What is their role? Good question. In fact, great question, Palak. The reason why we have a fund manager for a passive fund is that in passive funds, the idea is to create a platform जहां पे आपको index returns मिल पाए.
विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन कोई भी फंड के दो तीन अलग अलग भाग होते हैं। एक होता है उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एक Mm-hmm. होता है उसका ऑपरेशंस प्रोसेस, और एक होता है उसका डीलिंग प्रोसेस। तो फंड की रिटर्न आपको ट्रांसमिट हो बराबर टाइम से, पूरी तरह से, उसके लिए ही हमको फंड मैनेजर स्ट्रोक डीलर डिप्लॉय करना होता है। दे इंश्योर कि आपका जो पैसा कलेक्ट हुआ टाइमली रिपोर्ट हो, टाइमली डिप्लॉय हुए, उसी प्रोपोर्शन में, उसी मात्रा में जिस तरह से एक इंडेक्स डिजाइंड है। और अगर उसके अंदर में कोई भी चेंजेस हैं उसको मॉनिटर करना, मार्केट में कोई डिसरप्शंस हैं जिसका हमको ध्यान रखना है, उसको मॉनिटर करना, एक्शन लेना। एंड इफ देयर इज एनी वे वेयर वी कैन ऑप्टिमाइज रिटर्न्स, तो जैसे हम फंड के अंदर में जब एक्सपेंस रेशियो का आपको डेबिट आता है तो हम उसको कॉम्पेंसेट कैसे करते हैं, हाउ डू वी जनरेट अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा रिटर्न। तो क्या ऐसे कोई मार्केट टूल्स अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करके आपको ट्रैकिंग एरर मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए फंड मैनेजर की जरूरत होती है। तो फंड मैनेजर एक हर फंड में लगता है। पैसिव फंड के अंदर में उसका रोल बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू एन एक्टिव फंड मैनेजर, बट Mm-hmm. उसका रोल क्रिटिकल होता है एंड ऑफ द डे। ग्रेट। सो अरिजीत है हम लोग का पास। अरिजीत ने एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत पर्सनल क्वेश्चन टू यू अभिषेक। व्हाट हैज बीन योर बेस्ट एंड द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड व्हाई? सो अरिजीत, यू नो, आई द मोमेंट नीरज ने आपका नाम लिया, मेरे को अरिजीत सिंह के बहुत अच्छे अच्छे गाने याद आ रहे थे। बट my best investment I think has been the momentum index, momentum ETF. It's given phenomenal run up. Of course volatility comes along with it, लेकिन उसके अंदर में बहुत अच्छा रिटर्न आया है। उसके अलावा I think silver is another one of my favorite investments, silver ETF. I'm a big fan of precious metals. um, my biggest mistake I think is not having invested enough and not having invested early enough. मार्केट में जितना समय आप ज्यादा लगाएंगे, मार्केट को जितना ज्यादा प्यार देंगे, मार्केट भी आई थिंक उतना ही प्यार आपको वापस देगी। एंड गिव एंड टेक। एंड जितना ज्यादा लगा सकते थे, मतलब आई कुड हैव इन्वेस्टेड मोर, आई शुड एडमिट, एंड आई डिड नॉट, व्हिच आई थिंक इज माय बिगेस्ट मिस्टेक। Absolutely, and it's everyone, for new investors, for young people, it's a lesson for everyone. This is once in a lifetime kind of an opportunity for all of us. Let's there's a question from Akash Shah. Abhishek bhai, is there a fund where I can invest into get the best passive funds to industry? Oh yes, Akash, Mhm. there is something called a multi-index fund of fund that we created. इस फंड ऑफ फंड का ऑब्जेक्टिव है कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर में, डिपेंडिंग ऑन मार्केट एनवायरनमेंट, कौन से सबसे ज्यादा सूटेबल इंडेक्सेस हैं पहले वो आइडेंटिफाई करना, और कौन से सबसे बेहतरीन या कौन से मोस्ट लिक्विड या कौन से सबसे ज्यादा सूटेबल इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स हैं उसमें इन्वेस्ट करना। तो दिस फंड हैज एक्चुअली डन क्वाइट वेल। हमने इसको लास्ट ईयर लॉन्च किया था। इट हैज जनरेटेड 98% ऑफ मार्केट रिटर्न over the last 1 year and 1 month, and 96%, I'm sorry, Mhm. 96% of market return with only 44% of market risk। यानी कि मार्केट से आधा रिस्क और मार्केट के लगभग बराबर का रिटर्न। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि इसके अंदर में रिस्क कट करें और पैसिव फंड्स के जरिए हम ऑप्टिमाइज करें रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए, जो मार्केट रिटर्न है होपफुली वो डिलीवर करें, which I think we've been able to satisfy that objective. It's a beautiful category to invest in, but this fund requires a longer term commitment. This is also one of my newer investments, and I'm very Mhm. happy with this investment personally. Okay. Abhishek, there's a question from Abhishek. Okay. Is there any way of investing in Nifty SME Emerge Index? Right now we don't have one because ये वाला जो इंडेक्स है एसएमई एमर्ज, इसके अंदर में जो डेली लिक्विडिटी है इज नॉट टू ग्रेट। हम जब इंडेक्स फंड्स या ईटीएस बनाते हैं तो वन ऑफ द फर्स्ट पैरामीटर्स दैट वी टेस्ट फॉर इज मार्केट लिक्विडिटी एंड मार्केट रिस्क।
यहाँ पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है और लिक्विडिटी बहुत स्कैंटी है, तो ट्रैकिंग एरर तो ऑफ कोर्स विल बी थ्रू द रूफ। अगर कोई एक्सीडेंट्स हो गए कुछ कंपनीज के अंदर में, तो वो भी मतलब विल नॉट बी एक्सप्लेनेबल रियली। तो currently we don't have a fund which participates in this index. In fact, even in active fund category, currently you will not see any investments into this index. But अगर यहाँ से कोई कंपनीज ग्रेजुएट होके पेरेंट इंडेक्सेस में आती हैं, निफ्टी 500 बीएससी 500 में अगर आ जाती हैं, तो यू हैव फंड्स टुडे एनएससी 500 बीएससी 500 पे बेस्ड, जो कि इनको कैप्चर करता है इन अ स्मॉल मैनर। तो आई वुड से दैट if you understand some of these companies, go stock by stock. Don't look at a whole index approach. This is a very risky index to be in. Okay. So there's a question from Ugan Mehta. Ugan Mehta. अभिषेक भाई, स्टॉक में एक्शन ज्यादा है तो प्रॉफिट कमाने का भी ज्यादा मौका मिलता है, ईटीएफ में इतना एक्शन है क्या? I would have wanted to say mal lao, but उगन भाई, ETFs के अंदर में भी एक्शन इतना ही होता है। I'm sure you when you follow stock markets you see derivative positions, निफ्टी इंडेक्स बैंक निफ्टी के अंदर में जो वॉल्यूम होता है is far more than any large cap stock also on most days. तो indexes are very 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 active. अगर आप सिर्फ इंडेक्सेस पे फोकस करें, सिर्फ ईटीएस पे फोकस करें, तो जो टॉप लाइन इंडेक्सेस है ना, लार्ज कैप, बैंक निफ्टी, आईटी, आप इसकी रेंजेस के ऊपर में बाय सेल बाय सेल बाय सेल प्लान कर सकते हैं। एंड दिस staggered approach, a well studied approach, can actually generate a fairly decent sort of return. I know of investors जो कि अब इसके ऊपर में ETFs के ऊपर में PMSs ऑफर कर रहे हैं, which means that they are actually treating ETFs like stocks now. तो there is enough and more action. You just have to look deeper. आज की डेट में हर सेक्टर का ETF अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर सेक्टर का, विच इज डीप इनफ। तो आप सेक्टर रोटेशन का भी एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। देयर इज इनफ एंड मोर एक्शन। Very very happy to take it offline and help you understand this space. Okay, great. So I think Abhishek, we are receiving lot many questions, and I think this discussion can go on and on for hours together. But we have to, somehow, end this discussion today. So a question है विवेक प्रधान का. I think we'll take it as a last question, and also we'll continue after that as well, after Abhishek. So Nifty Bank reached an all-time high of 1 year in this week, but HDFC Bank and Kotak Bank does not seems to have moved much. Should I invest in those two stocks specifically for any bank ETF or any bank ETF in general? So Vivek, thank you for sort of validating what I said, I think about 2 or 3 weeks ago, जब हमने बैंक ETF का इनफैक्ट एग्जांपल लिया था कि ETFs में इन्वेस्ट करना वर्सेस स्टॉक्स क्यों फायदेमंद है। अगर किसी ने लेट्स से सिर्फ HDFC बैंक में पैसा डाला होता, वुड हैव बीन रूइंग देयर डिसीजन, क्योंकि 3 साल में प्रैक्टिकली इट हैज नॉट मूव्ड एट ऑल। लेकिन HDFC बैंक, despite being the highest holding in bank nifty, निफ्टी बैंक ETF, जैसे हम लोग एक बैंक ETF रन करते हैं, उसका 3 साल का रिटर्न अभी भी डबल डिजिट्स के अंदर में आता है। द रीजन बीइंग कि SBI ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है, ICICI ने स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है, सो हैज बॉब, कैनरा, इंडसइंड बैंक एंड द अदर स्मॉलर बैंक्स। एक्सिस बैंक हैज बीन आल्सो गुड रिटर्न जनरेटर। तो दूसरे बैंक्स ने कॉम्पेंसेट किया है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का जो वैल्यू है वो ETF आपको प्रोवाइड करता है। ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन कैन डिलीवर वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स, बट इट कैन आल्सो डिलीवर लॉसेस। तो एग्जैक्टली द सेम पॉइंट जो आपने बोला, आपको डाइवर्सिफिकेशन का बहुत फायदा मिलेगा अगर आप एक बैंक ETF में इन्वेस्ट करेंगे। HDFC बैंक और कोटक बैंक चले नहीं हैं। इट मे ऑल्सो मीन कि शायद ये कंसोलिडेट हो रहे हैं और नेक्स्ट लेग ऑफ रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। इट्स नॉट अ फॉरवर्ड गाइडेंस दैट आई एम गिविंग यू, बट
ऐसा भी होता है, मार्केट में पाया गया है कि कुछ कंपनीज अपने आप को पेस करती हैं, मतलब मार्केट साइकिल सिक्लिकल होती है, तो कुछ कंपनीज जो नहीं परफॉर्म करी हुई होती हैं वो इन द लास्ट लेग काफी स्ट्रांगली परफॉर्म करती हैं. एंड इफ दैट हैपेंस इन केस ऑफ एचडीएफसी एंड कोटक, आई थिंक देर आर मोर लेग्स टू द रैली, क्योंकि ये दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी में भी प्रेजेंट है और बैंक निफ्टी में भी प्रेजेंट है. तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने हाईज दिखाए, हाई हाई पॉइंट्स हिट किए हैं, देयर कुड बी मोर लेग्स टू द रैली अगर ये स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं. एंड किसी भी इन्वेस्टर के लिए आई थिंक ईटीएफ इज अ बेटर बेट than going a single stock way. Wonderful. I think Abhishek, we had a lovely discussions today. Our participants, they have asked so many questions, and also I'd like to tell all our viewers कि अगर आपका कोई भी questions unanswered रह गया है, don't worry. Next time we're going to pick up those questions and we'll continue our discussions. So please do join always our programs, and we try to educate our viewers as much as possible. And for that, I would like to thank Abhishek a lot. Abhishek, thank you so much for being part of this program. Looking forward to see you again in the next week. Perfect. Thank you so much, Neeraj. Always a pleasure to be here. All the best. Thank you. So that was Abhishek Singhal from Aditya Birla Sun Life. So next speaker is Vandana Trivedi. We're going to talk about fixed income funds. So Vandana Trivedi is the head of institutional business and passive. She joined Axis AMC in 2023. She has over 2 decades of experience in leading various functions in the institutional and distribution verticals, and actively involved in drawing strategies and developing products. Before joining Axis AMC, she was with Bandhan AMC, and before that, she was with HSBC AMC. So, Vandana, I'd like to welcome Vandana. Vandana, welcome to the show. Yeah, Vandana, are you there? Okay. Yeah, Dhritish is there. If you can bring her to the platform. Yeah, Vandana, if you can switch on your camera, please, and also your mic. If you can help Vandana switching on her mic and okay. So I think, guys, there is a little bit of technical problem today. I don't know why both the speakers had some problem, but anyway, we'll continue our discussions. She will be back in few seconds. Now again, we are going to discuss about fixed income. Where you can invest in, different, fixed income funds compared to. In India, most of the people invest in bank fixed deposits. So, what are the advantages? Why we should be investing in, fixed income funds? What are the advantages, like tax deferment, liquidity, Hi. penal charges? Hi Vandana, welcome. Hi. So sorry, I was actually logged in about 10 minutes back, and I was listening to all the interesting questions and answers on passives, and I also lead passives. So I was listening to it with a lot of interest. I do not know what happened just when my turn came. So I No re-logged in. problem. Sorry about the delay. Absolutely no problem. We'll continue with the discussions, in fact. So Sure. Vandana, absolutely. So as we know, tell us about fixed income, how it is Yeah. different. What is the fixed income funds are all about? Give us Mhm. a basic understanding. Sure. Okay. So I'll start from the start. All right. Yeah. Whenever we speak about mutual funds, the usual discussions are centered around equities only. And I've done a lot of sessions with you. I've done a lot of sessions in other platforms. I even listened to the last one, which went before me. And typically, for us as investors, the most intuitive asset class that we think about is equity. And in fact, Mhm. Abhishek did mention about silver as as one of his preferred
investment options, right? So which means that there are other asset classes too, which you can invest into or experience via the mutual funds platform, and fixed income is one of them. In fact, fixed income is a very large component of that asset of the mutual fund platform. We actually manage hold your breath, about 16 to 17 lakh crores of assets out of the total 50 lakh crores that mutual funds manage into fixed income assets. Now, what is fixed income was your question. So fixed income, I would like to talk about fixed income in terms of a relativeness to equity as an asset class. So when you're buying an equity in a company or an equity share, you essentially take ownership in the company. आप एक part owner हो जाते हैं to the extent of your shareholding. आपने जितने शेयर लिए हैं उसके हिसाब से आप एक ओनर कहलाते हैं उस कंपनी के, विच मीन्स दैट आपकी कंपनी अगर अच्छी करे, प्रॉफिट्स आए तो वो आपके नाम, लॉसेस आए तो वो भी आपके नाम, राइट? एंड वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस करके आपको नहीं आता, या तो आपको डिविडेंड्स आते हैं और शेयर प्राइसेस ऊपर जाते हैं, राइट? हाउएवर फिक्स्ड इनकम में क्या होता है? व्हेन यू बाय इनटू द फिक्स्ड इनकम ऑफ अ कंपनी, और व्हेन अ कंपनी इज, लुक एट इट द अदर वे. इफ आई एम अ कंपनी, आई डिसाइड टू रेज कैपिटल, बट आई डिसाइड टू रेज कैपिटल विया द फिक्स्ड इनकम रूट, राइट? तो जब आप फिक्स्ड इनकम पेपर खरीदते हैं किसी कंपनी का, देन यू डू नॉट बिकम एन ओनर, you are actually lending to that company, right? So now when you lend to that company, the company pays an interest to you. So if the company is doing exceedingly well, you do not participate in profits, you just get your interest. If the company is running into losses, you still get your interest. Of course, there are cases where sometimes there are delays or defaults, but that's for a different discussion. But in fixed income, your profits and losses are limited to the and you do not participate in them. What you get as return is basically coupon, as we call it, or interest payment is the more layman word for. So that's a big difference between fixed income and equity. So there is a sense of visibility of return. आपको broadly एक idea रहता है कि कितना return आएगा, because it's a fixed income asset. So that's what fixed income is about, Neeraj. Okay, great. Now अभी देखिए हम लोग के इंडिया में ना मैक्सिमम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं पैसा, मतलब हमेशा कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो फिक्स डिपॉजिट कर लो. नाउ what is the advantages of a fixed income fund over fixed deposits? Now we've been discussing, in fact, a few days back also. So if you can, I think that could be a very, very interesting, things to discuss. Okay. See, I think the first investment of anyone, जो भी आपकी इन्वेस्टर्स हैं, जिसने भी शुरुआत की होगी सेविंग की, राइट? इन्वेस्टमेंट करके नहीं, सेविंग. जब मैंने इतना कमाया या मेरे पास इतना पैसा है जिसका मैंने इतना खर्चा किया, जो बच जाता है, यू पुट इट असाइड, राइट? वो आप कहाँ रखते हो? That money is kept aside in a bank account typically, right? Or in what is called as a fixed deposit, in an FD. Correct. So that's the first step of savings. So especially in India, the first step of saving is fixed deposits. What we are talking about in mutual funds and fixed income mutual funds is something very similar, right? जहां पर क्या होता है, everything that you know. Now, what do you know about mutual funds? When you invest in a mutual fund, what are you looking for? You're looking for diversification, right? वो चाहे equity हो, चाहे fixed income हो, it's the same. You're looking for diversification. Means even if you invest a 5,000 rupee in a fund, you are getting a portfolio of securities. The same thing happens in fixed income also, right? When you have 5,000 rupees and go to your bank, okay, be it any bank, and you tell them that, listen, I want to make an FD in the bank. तो आप क्या करते हो? ABC बैंक का FD लेते हो 5,000 rupees के लिए, right? You take the FD of that bank. However, you come to us and you tell us that I want to invest in your fixed income fund, right? And I have 5,000 rupees to invest. Then what I do is I give you a portfolio of papers which includes a lot of bank deposits, a lot of company deposits, a lot of government of India borrowings, जिसको हम, so government is the biggest borrower in the country today. अगर आपको if you can relate to this, government is the largest borrower. जो भी we are still running fiscal deficit. Fiscal deficit का क्या मतलब है? Government को इतना revenue आता है from various sources और government इतना खर्चा करती है, उन दोनों के बीच गैप है. वो गैप को गवर्नमेंट कैसे मीट कर रही है?
by issuing debt, by borrowing from people like us, right? So government borrowings bhi hote hain hamare portfolios mein. So the simple fact that you achieve in a fixed income mutual fund for the same amount of money is diversification. Secondly, आप अगर fixed deposit करते हो, आपने से समझ लो 1 साल का deposit किया, and you want your money back in say 6 months, you know very well that there is a penalty that is levied, right? तो उसमें बेसिकली आपने प्री मैच्योर विड्रॉल की बैंक आपको एक पेनल्टी लगाती है, राइट? इन अ म्यूचुअल फंड एट द क्लिक ऑफ 1 or 2 or 3 buttons, you get your redemption and you get it in the next day. So ease of transaction or liquidity, as we call it, is available in a fixed income mutual fund, which is very different to how an FD operates. So these are the two very simplistic differences that I can give, which is portfolio diversification and liquidity. There is another thing which is called as what we call as is gains possible. I just told you that fixed income में आपको एक interest income मिलता है, and that's all there is. But there are occasions where a fund manager is able to deliver gains which is more than the coupon value, which is more than the interest. So that is also a possibility in fixed income mutual funds. Okay. Now, yes, आपने कहा है कि gains, fund managers can deliver gains as well, right? अभी हम लोग इंटरेस्ट साइकिल का साथ काफी लिंक्ड है, हम लोग का जो फिक्स इनकम बॉन्ड्स वगैरह उनका प्राइसेस वैल्यू. नाउ हम लोग का जो इंटरेस्ट रेट है, इट्स ऑलरेडी इन द पीक इंटरेस्ट रेट साइकिल. सो उम्मीद है कि आने वाले सालों में, आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है. So in that case, the bond investors are going to gain from there? Yeah. So I'll tell you why you are right. In that case, bond investors will gain. I'll tell you why. ये समझना बहुत जरूरी है to be able to appreciate why fixed income investments or fixed income mutual fund investments are so useful, right? समझ लीजिए, today you have a fixed income. I'm a fund manager of a fixed income fund. Today I have a fixed income portfolio. वो पोर्टफोलियो का यील्ड है, एग्जांपल के लिए हाइपोथेटिकली से 7.5%, right? It's a 6-month portfolio, 6-month maturity portfolio, which is something like a money market fund as we call it, and उसका portfolio yield है say 7.5%. Now so which means that जो सारे मेरे पेपर्स है उन सबको मिला के मेरे पास yield है 7.5% का. Now supposing in say the next policy or the policy after that, RBI decides to cut rates, which is the expectation that US Fed rates cut करेंगे और उसके बाद banks, other world banks like the RBI will also start cutting rates. Now supposing the RBI cuts rates, right? इसका क्या मतलब हुआ? Which means that today when I go out in the market to buy a fixed income paper, and most importantly, before everything else, the papers that we hold in our portfolio in fixed income mutual funds are all tradable in the market. Right? All of them are tradable. Just like equity stocks आपके trade होते हैं, fixed income stocks, अगर मैं बोलूं तो गलत शब्द है, fixed income securities बोलते हैं. Fixed income securities भी trade होते हैं, right? They quote at a price, right? तो क्या होता है, मेरे पास एक 7.5% का पेपर है, right? अभी RBI ने आके, RBI has cut rates, which means that today for that same period, if I were to go to the market, I will be able to borrow at a lesser rate क्योंकि market में rates नीचे आ गए हैं, right? So as a portfolio manager, when I am holding papers of a certain maturity at a higher coupon and market rates have come down, which means the prices of my papers will go up, right? क्योंकि आज की तारीख में market में interest rate has come down, but the paper that Vandana is holding in her portfolio is yielding higher coupon at 7.5%, right? Therefore, the prices at which my papers trade will go up. अब जब prices ऊपर जाएंगे, क्यों ऊपर गए? क्योंकि rates कट हुए. Basically, जब interest rate कट होता है, तो जो debt papers हैं, उनके prices ऊपर जाते हैं. And when prices go up, obviously my NAV also moves up because NAV is nothing but a sum total of the weighted average portfolio allocation of each of my papers, right? So now my prices go up, my NAV goes up, and I actually end up making returns, which is much more than the 7.5% of my portfolio yield, right? Which basically means that my portfolio is readjusting
to the new lower rates. That's Hmm. where you end up making mark to market gains in fixed income portfolios also. And जैसे आपने कहा नीरज, at this juncture when you're expecting interest rates to come down, fixed income investments are a great idea to put your money into, not only from an asset allocation framework but also from the potential of making some mark to market gains also in your portfolios if interest rates actually end up coming down. There's a big if there, but it's a consensus view that rates will come down. वंडरफुल. सो वंदना जी, काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं. एक Okay, विवेक already. कुमार है, उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं कि कैन यू प्रोवाइड फिक्स्ड इनकम स्ट्रेटजीज इन Okay. वॉलेटाइल और रेगुलर मार्केट. Yeah. मुझे Is there अपने इन्वेस्टमेंट से सैलरी चाहिए. so basically you're looking at passive income as they call it, which is very different from passive funds. Okay. Is there हाँ. any way I can share just one a slide? Is it possible, you Yes, think? absolutely. You can just go and share. Okay. Present, right? I have to click the Yeah, present present. button, right? Yes, yes. Okay. I'll see if I can just or maybe it isn't. Okay, sorry. I'll keep हाँ. answering this question as I attempt to, as I attempt to share the slide with you. So fixed income में हम कैसे invest करें? So हम क्या करते हैं basically? We try to tell you that 1 minute. Yeah, is that visible? No, not yet. Okay. Yeah, it is visible now. It is It is visible. visible. I'm going to Yes. just skip a few slides to show you. So this is a corporate profile of Axis Mutual Fund. This may, I just want to show this slide. Have you got the slide which is called fixed income product positioning? Yeah. Yes, I got the slide. Fixed income product positioning. Yeah. So can We can Vivek and see that. everyone else see this? Mm-hmm. Yes, we can see it. या सो ये सिर्फ एक्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल फिक्स्ड इनकम फंड्स, राइट? सो इसको मैं आपको समझाती हूँ. सबसे ऊपर लिखा है एक्सेस डेट ऑफरिंग्स. दिस कैन बी एनी म्यूचुअल फंड, बट आई रिप्रेजेंट एक्सेस, सो आई विल शो यू एक्सेस म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स. तो फिक्स्ड इनकम को आप टिपिकली कैसे देखना चाहिए मैं आपको बताती हूँ. सो जो आप मेरा जो पर्पल बॉक्सेस को एक बार देखिएगा, right? The first box on the left hand side says to meet liquidity needs. Neeraj, is that visible? If it isn't, please tell Absolutely me. Right? visible. Yeah, so the first board, so आप fixed income का asset allocation की हमने बात नहीं की basically. So fixed income का क्या होता है use in your portfolio, right? अगर आपको wealth create करना है तो आप equity में invest करें. अगर आपको income earn करना है तो आप fixed income में आए, which also means that any time horizon up to 5 years, look at fixed income for any need up to 5 years. Anything 5 years and beyond, you could look at equity, because equity में क्या होता है, रिस्क ज्यादा है. आप प्रॉफिट या लॉस शेयर करते हैं equity में, whereas fixed income में आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं, राइट? So ये जो पूरा स्लाइड है, it shows you your different requirements which can be met by fixed income. So the first purple box is to meet liquidity needs, right? What does this mean? Instead of your money lying today in a savings bank account, you can actually park your money in a fund like an overnight fund or a liquid fund, which are also called as cash funds, right? So जो overnight और liquid fund है, उनको आप use करें to meet your liquidity needs. यहाँ पर जितने भी फंड्स हैं, सब में आपको T+1 में पैसा आपके पास आ जाता है, राइट? तो अगर आपको कल पैसा चाहिए तो आज आप रिडेम्पशन प्लेस करेंगे 3 बजे से पहले, तो कल आपके बैंक अकाउंट में सुबह 9 साढ़े 9 के अंदर पैसा आ जाएगा. सो टू मीट योर लिक्विडिटी नीड्स यू कैन यूज फिक्स्ड इनकम. टू मीट योर कोर इन्वेस्टमेंट नीड्स, राइट, जिसमें ना हम इंटरेस्ट रेट रिस्क ज्यादा लेते हैं ना क्रेडिट रिस्क ज्यादा लेते हैं, उसको आप देख सकते हो फॉर अ पीरियड एनीवेयर फ्रॉम से 3 months to up to 3 to 5 years. And there you can look at funds like money market fund, ultra short term fund, low duration funds, short term funds, corporate bond funds. ये सब आते हैं उस कैटेगरी में where you meet your investment needs, जो पैसा आप 3 महीने से लेकर 3 साल तक रख सकते हैं,
राइट। और उसके नीचे जो टेबल्स हैं दोस एक्चुअली टेल यू कि इन सब का मैच्योरिटी कितना है, हर पोर्टफोलियो का कितना मैच्योरिटी है। एंड एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू ब्रॉडली अलाइन योर इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी विद द फंड्स मैच्योरिटी, you will stay broadly in line and make returns that are similar to the funds what we call as portfolio yield or YTM. लास्ट वाला जो पर्पल बॉक्स है दैट इज टू से दैट यू नो अगर टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, जैसे अभी एक टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी है कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, सो इससे आपका मार्क टू मार्केट गेन्स आने का चांस है। सो देयर यू कैन लुक एट higher duration funds like dynamic bond funds or gilt funds, right? So broadly आप अपना पूरा जो fixed income का जो आप यूज करेंगे, fixed income mutual fund को आप यूज जो करोगे उसको आप ये 3 buckets में, bucket अगर मैं बोलूं तो डिवाइड कर लीजिए। एक होता है to meet your liquidity needs, जो एकदम ही आपके अंडर 3 months के नीड्स हैं उसके लिए, जहां पर ओवरनाइट और लिक्विड फंड देखिए। और एक होता है जो आपका बेसिक फिक्स्ड इनकम कोर पोर्टफोलियो है, जहां पर 3 महीने से लेकर 3 साल तक आप रख सकते हैं पैसे। There you look at anywhere from money market ultra short term right up to short term funds or corporate bond funds. And then whenever the market gives you tactical opportunities, you look at funds like gilt funds or dynamic bond funds. So this is what I would kind of recommend that you could look at from a fixed income investment perspective. Yeah, I think that was quite important part that you have said, like Sure. tactical part and then core portfolio and a liquidity perspective. In fact, I'd like to give you an example. One of my sisters is building her house, and she used to keep the money in the bank. And then I think based on the discussions that we had, she parked the money now in the fixed income, and there, the money is also there, and she's using it as well in building her Certainly, house. and I hope it was one of Access funds. Yes. But anyway, okay. Now let's come to next question. Very important question. What are the factors? कौन से factors हम लोग को consider करना चाहिए before investing in a fixed income fund? Okay. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप कोई भी कहीं भी जब आप इन्वेस्ट करते हो, किसी भी बैंक के एफडी में डालते हो, राइट, आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट है, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट है, राइट। एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, एक्सिस बैंक हो, सो दीज आर बैंक नेम्स व्हिच कम विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। ये ट्रस्ट कहाँ से आता है? बेसिकली आपको उम्मीद है that these banks are very safe banks. Your money will not go into you will not lose your money. 2019 में there were some banks, like some cooperative banks, jahan investors have lost money, right? FD holders have lost money, right? So सबसे पहला होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो क्वालिटी देखें कि उसमें कोई क्रेडिट रिस्क तो नहीं है, कोई ऐसा पेपर तो नहीं है जिसकी रेटिंग एकदम खराब हो, या फिर कोई ऐसा पेपर तो नहीं है जो कोई प्रमोटर ग्रुप से हो जिसके ऊपर आपको पूरा ट्रस्ट नहीं है, पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। सो दैट्स अ क्रेडिट रिस्क पार्ट। The other very important risk that people do not talk about too often is what is called as interest rate risk, right? It is very important that you match your investment horizon to what is called as portfolio maturities. अगर उसमें थोड़ा मिसमैच होता है तो क्या होगा कि इफ इंटरेस्ट रेट्स गो अप, लाइक आई टोल्ड यू कि इंटरेस्ट रेट जब नीचे आएगा तो हमारे सिक्योरिटी के प्राइसेस ऊपर जाएंगे, तो एनएवी ऊपर जाएगा। तो उल्टा भी ट्रू है, विच इज दैट समझ लीजिए रेट्स ऊपर गए तो आपके जो एनएवीज हैं वो नीचे आएंगे, राइट? योर प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज नीचे आएंगे और एनएवीज नीचे आएगा। सो देयरफॉर यू विल मेक लेस मनी और यू विल मेक लो रिटर्न्स, राइट? यू विल नॉट लूज योर प्रिंसिपल बट यू विल मेक लो रिटर्न्स। सी क्रेडिट रिस्क में यू कैन लूज योर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट रेट रिस्क में आप प्रिंसिपल लूज नहीं करते हो बट आपके रिटर्न्स लो होते हैं, राइट? नाउ that's another important factor that you should keep in mind. समझ लीजिए आपका 3 साल का होराइजन है, then you invest in a fund which is a short term fund or a corporate bond fund with a 3-year or a 4-year maturity. आप उस 3 साल के होराइजन के लिए आप 3 महीने के मैच्योरिटी के फंड में डालकर भी कोई फायदा नहीं है, because you will not make enough returns. At the same time 25-30 ईयर मैच्योरिटी के फंड में डालने से भी वो रिस्क शायद आपको मैच नहीं हो, राइट? सो इंटरेस्ट रेट रिस्क को भी आपको ध्यान देना चाहिए अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट रिस्क। ओके एक हम लोग का व्यूअर है, ही इज मिस्टर विनय नायक। उनका एक क्वेश्चन है, एक्चुअली आई डोंट नो वेदर विनय विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन और नॉट। इट्स ओके, I'm just going to miss that question somewhere again, but anyway ठीक है, till I search that question I'll ask another question. ये जो फिक्स इनकम कैटेगरी है, ये किस तरीके का इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है? हर तरीके के इन्वेस्टर के लिए।
ऐसा कोई ऐसा इस टाइप का उस टाइप का इन्वेस्टर करके नहीं है फिक्स्ड इनकम के लिए। इक्विटी हाँ के लिए हाँ। मैं फिर भी बोलूं कि समझ लो आई डोंट हैव एन इन्वेस्टमेंट होराइजन, या फिर आई एम टूल आई डोंट हैव सोर्सेज ऑफ इनकम, आई हैव टू लिव ऑन माय माय सेविंग्स एटसेट्रा। सेविंग्स। देन you could look at the proportion of equity, उसको कम करोगे आप एटसेट्रा। बट फिक्स इनकम ऐसी चीज है, आपका रोज खर्चा निकलता है, राइट? एवरी डे यू स्पेंड ऑन समथिंग और द अदर, एवरी मंथ यू स्पेंड ऑन समथिंग और द अदर। टू मीट ऑल दोस नीड्स यू कैन लुक एट शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम फंड्स. At the same time, for your investment needs as well. So assume that, like for instance, I have a child who is likely to go to, who's already in college, another who's likely to go to college in another 4 years time, right? Abhi, so she wants to go to a college maybe outside there, which comes with a certain fees. Now that money I will not invest in equity. That money I will keep in fixed income, and I'll say that, let me earn whatever rates I'm getting today. As per today's rates, it's about say 7.5 760 levels. That's good enough for me, and I'll invest in fixed income. So anything, like I told you, up to a time horizon of 3 to 5 years जो आपकी requirements हैं, उसको आप fixed income में रखें, and anything beyond that you look at equity. ओके ओके। अच्छा, एक विनय नायक का क्वेश्चन है। सर, मेरा सवाल है कि ये बच्चे के लिए किस तरह से इन्वेस्ट करें? अच्छा, मतलब उन्होंने चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग Yeah, टर्म के लिए, बच्चे yeah. के लिए, तो सर, वहां चाइल्ड पे के लिए करना है तो आप इक्विटी ही करिएगा। क्योंकि मेरे को इक्विटी ही मुझे करिएगा। अगर वो चाइल्ड, वो मेरे चाइल्ड जैसा है जो अभी जवान हो चुका है, एंड एंड देयरफॉर अगले हाँ। 2-3 साल में आई हैव टू पे फीस, उनका फीस अगर मुझे भरना है, देन मैं फिक्स्ड इनकम सजेस्ट करूंगी। पर अगर आपका बच्चा ऐसा बच्चा है कि 4-5 साल का बच्चा है और उसके कॉलेज जाने के लिए या आपको बहुत लंबे समय का आपके पास टाइम है, तो आप इक्विटी कीजिए। हावेवर अगर आपका बच्चा समझ लीजिए अभी 4-5 साल का है, अगले साल उसको आप स्कूल में आप एडमिट करना चाहते हैं, स्कूल का जो भी लगता होगा, डोनेशन लगता होगा, या फिर कुछ बुलेट पेमेंट्स होते हैं, स्पेशली आजकल नर्सरी एलकेजी यूकेजी में तो बहुत हाई होते हैं फीस, राइट? विच मीन्स वो लायबिलिटी आपके अगले 1 साल 2 साल के अंदर आने वाली है, उसको आप जरूर फिक्स्ड इनकम में ही लगाइए। तो आप कौन से खर्चे की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट वेरी क्लियर इन दिस। अगर वो खर्चा 3 साल के अंदर आ रहा है तो पक्का फिक्स्ड इनकम में लगाइए। Anything over that, you could look at equity. ओके। एक क्वेश्चन है सिद्धार्थ से, आई थिंक विल टेक दिस क्वेश्चन एज अ लास्ट क्वेश्चन। Okay. ये टैक्सेशन रिलेटेड है। Okay. ओके, सो उनका क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट टैक्सेशन एसोसिएटेड विद दोस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट? इज इट Yeah. बेनिफिशियल इन केस वी वांट टू इन्वेस्ट फॉर लेस देन ए ईयर? Okay. So the taxation in fixed income mutual funds is the same as the taxation in any other investment or investment product, which is a non-equity product, right? So what is a non-equity product? A non-equity product is defined as any investment which has less than 65% in equity is a non-equity product. So therefore, चाहे वो fixed deposit हो, चाहे वो bonds हो, चाहे वो future mutual fund investments हो, सब के ऊपर टैक्स, आपका जो भी इनकम टैक्स रेट है वो लगेगा, राइट? द एडवांटेज दैट यू हैव इन अ फिक्स्ड इनकम फंड इज दैट if, for instance, you assume that I'm assuming that you invest for a period of say 3 years, right? Now for a period of 3 years, whatever returns the fund makes on that, on a periodic basis till you actually redeem from the fund, there is no tax impact, right? Unlike in an FD, where what happens is beyond a certain threshold. So अगर साल में आपका शायद वो 40,000 का threshold है, please consult your tax expert on this. I'm not too sure, but I do know that beyond a certain threshold, a bank deducts a TDS at the rate of 10% for the life of your FD with the bank, right? Whereas a mutual fund does not do any TDS for domestic investors. So we are resident investors. So the tax incidence lies on you at the time of, not even at the time of redemption, but at the time that you file your returns in the financial year in which you've redeemed. राइट? सो क्या होता है, वो टीडीएस कट जाने से वो पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ फिक्स्ड इनकम फंड्स, बिकॉज देयर इज नो टीडीएस इम्पैक्ट, वी कीप इन्वेस्टिंग दैट। सो इफ यू नो द प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, to that extent you have a higher capital that is at work for you,
right? Unlike in an FD जहां पर वो TDS कट जाता है. Wonderful. I think, Vandana, we had a great discussion. So many questions are being answered. Concepts are Yes. cleared. That Okay. I like that three buckets principle that you have said, Sure. Sure. tactical, then core portfolio and And liquidity. liquidity needs. And Yeah. yes, absolutely. I think conceptually, at least our viewers and we all, we got lots of information and understanding. So with Thank you, that, I would Neeraj. like to thank you for Sure. being a speaker for this program, and all the viewers for asking interesting questions. Please do Certainly, participate yes. every Thanks a week. lot to everyone, and I look forward to coming back to your show again. Yes, thank you. Thanks, Vandana. Thanks all Thank our you. viewers. Bye. Bye bye. Yeah, bye.